So in the previous video, I had talked about nervous system regarding its function, its part, and the detail about the peripheral nervous system. Hello and welcome to Learn Something New. Through today's video, you'll get a detailed information regarding neuron or the nerve cell. तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि नर्व्स किसे कहते हैं। नर्व्स वो सेल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में मैसेजेस को कैरी करने का काम करते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स. As you're already aware that the peripheral nervous system is composed of nerves, after today's video, you'll be also aware of that what the nerves are made up of. Yes, you're right. Nerves are made up of neurons. न्यूरॉन्स को फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है. एंड यू नो दैट नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड अ कॉम्पैक्ट नेटवर्क ऑफ नर्व्स. The non-dividing property of neuron is what make it different from other cells. Moving ahead, now let's talk about the function of neuron. As mentioned earlier also, neuron, the nerve cell, perform the function of transmitting information either in the form of electrical or chemical signals. Neuron is surrounded by a fluid that is known as ECF, which has high concentration of positive ions. You will get to know about the importance of ECF when we would be discussing about action potential. The diagram that is visible to you all is the diagram of a neuron. Neuron is made up of several parts. And with the help of this slide, let's try to answer different parts of neuron. So observe this slide carefully. तो ये जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर जिसको ए से लेबल किया गया है उसका नाम होता है डेंड्राइट. और जिस सरफेस से ये डेंड्राइट्स अराइज हुए हैं हम उसे सेल बॉडी या फिर सोमा के नाम से भी जानते हैं. सेल बॉडी के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. जिस जगह पर सेल बॉडी नैरो होने लगे और आगे एक्सॉन को फॉर्म करे उस जगह को हम एक्सॉन हिलॉक बोलते हैं. जो एक्सॉन होता है वो एक शीट से कवर्ड होता है जो कि फैट से मिलकर के बनी होती है. उस शीट को हम मेलिन शीट के नाम से जानते हैं. और जिस जगह पे मेलिन शीट नहीं प्रेजेंट होती है उस जगह को हम नोड्स ऑफ रेनवायर के नाम से जानते हैं. मेलिन शीट के अंदर भी एक सेल प्रेजेंट होता है जिसे हम स्वान सेल के नाम से जानते हैं. स्वान सेल ही है जो कि मेलिन शीट का फॉर्मेशन करता है. Now pause the video for a while and try to answer the labeled parts of a neuron. So now let's move further and now we would be talking about the function of the parts of neuron. Let's begin by discussing the function of dendrite. The function of dendrite is that it receives the message or the information and then it transfer it to the soma, that is also known as the cell body. एक्सॉन का फंक्शन ये होता है कि वो इन्फॉर्मेशन को न्यूरॉन, मसल या ग्लैंड तक पहुंचाएगा. The simple function of axon hillock is that it connects the cell body to axon. The function of myelin sheath that is formed by the Schwann cell is to increase the rate of impulse conduction or the process of transmitting the message. साइनेप्टिक नॉब जो कि हमारे एक्सॉन टर्मिनल्स के एंड पर प्रेजेंट होता है उसका फंक्शन होता है कि वो दो न्यूरॉन्स के बीच में एक कनेक्शन को फॉर्म करे. न्यूक्लियस दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल बॉडी कंट्रोल्स द एंटायर न्यूरॉन. Nodes of Renvire that is found at the place where myelin sheath is absent allows the diffusion of ions. We would be discussing about how ions diffuse when we would be discussing about action potential. एक्सॉन की ब्रांचेस को हम एक्सॉन टर्मिनल्स के नाम से जानते हैं और इनका फंक्शन होता है कि ये मैसेजेस को एक्सॉन से साइनेप्टिक नॉब तक कैरी करें so that further synaptic knob can make a synaptic connection with another neuron. Nasal body are found inside the cell body and its function is to synthesize protein. The pathway through which the information travels inside the neuron is that it is first received by dendrite and then it is passed to cell body, then axon terminal, and then at the end it is transferred to synaptic knob.
The jelly-like fluid that is present inside the axon is known as exoplasm, and the jelly-like fluid that is present inside the cell body of the neuron is known as neuroplasm. The outer membrane of axon is known as exolemma, and its function is to transmit the information between neuron and Schwann cell. So with this we came to an end of this video. Thanks for watching.